hope she is here. Is she? Yes, sir. अभी नहीं आई, मैंने उन्हें रिमाइंडर वैसे दे दिया है. So Okay. she'll be here. क्योंकि उनकी फरमाइश पे ये प्रेजेंटेशन हो रही है और वही ना हो तो फिर अच्छा नहीं लगेगा. I जब तक have हम given ये लंबी सी नज़म पढ़ते हैं तब तक शायद होपफुली वो आ जाए. उसमें शेर है कि जिसको सदमा शब तन्हाई के अय्याम का है, ऐसे आशिक के लिए नेट बहुत काम का है. नेट फरहाद को शीरी से मिला देता है, इश्क इंसान को गूगल पे बिठा देता है. वेल, दिस वाज सरप्राइजिंग. इश्क इंसान को गूगल पे बिठा देता है. काम मकतूब के माउस से लिए जाते हैं, आह सोजा को भी अपलोड किया जाता है. टेक्स्ट में लोग मोहब्बत की खता भेजते हैं, घर बताते नहीं ऑफिस का पता भेजते हैं. पहले चिलमन हुआ करती थी, अब स्काइप है. इश्क कहते थे जिसे एक नया समझौता है. पहले दिल मिलते थे, अब नाम क्लिक होते हैं. दिल का पैगाम जब ईमेल से मिल जाता है, मेल हर चौक पे फीमेल से मिल जाता है. इश्क का नाम फकत आहू फगा था पहले, दाग खाने में ये आराम कहाँ था पहले. आईडी जब से मिली है मुझे हमसाई की, अच्छी लगती है तवालत शब तन्हाई की. नेट पे लोग जो 90 से प्लस होते हैं, बैठे रहते हैं वो टस होते हैं न मस होते हैं. फेसबुक कूचाए जाना से है मिलती जुलती, हर हसीना यहाँ मिल जाएगी हिलती जुलती. ये मोबाइल किसी आशिक ने बनाया होगा, इसको महबूब के अब्बा ने सताया होगा. टेक्स्ट जब आशिक बरकी का अटक जाता है, तालिबे शौक तो सूली पे लटक जाता है. ऑनलाइन तेरे आशिक का यही तौर सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही. वेल, दिस वाज I was impressed Yeah, with sir. Good one. Good one. it was surprisingly, the flow was impressive. How he managed his Skype, जिस पे हम लोग भी बैठे हुए, और how he managed the Google and other stuff. So keep enjoying it. I will send this to all of you and you can read it afterwards as well. So shall we start now or shall we wait? Sir, start करिए. Yeah. Let's hope बेनजीर आ गई हूँ. बेनजीर अभी मुझे आ नजर गई नहीं हैं. आ. Okay. So, mental health law is Sir, again. the slides are not visible. आप मुझे नजर आ रहे हैं, slides नजर नहीं आ रही हैं. I don't know, बाकी सबके साथ भी ऐसा ही है शायद. Okay, let me. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अब देखो, अब नजर आ रही है. आप I have shared my screen again. yes. Okay, can you see it now? Yes, sir. Okay, वो sharing रुक गई थी, so वो दोबारा से मैंने on कर ली. Now, वालेकुम अस्सलाम बेनजीर. This presentation with your name, so be there. Okay, don't disappear. Okay. Inevitable complex relationship between mental health and human rights. जब भी हम mental health law की बात करते हैं, so this is a complex, unfortunately, situation. Why we need law? Why we need mental health law? It is all related to human rights. अदल कहते हैं किसी भी मुल्क और मुआशरे की बदहाली और तरक्की की मिसाल होता है. सो अगर किसी मुल्क में अदल और इंसाफ अच्छा है तो वो मुल्क तरक्की याफ्ता है, और अगर किसी मुल्क में अदल और इंसाफ अच्छा नहीं तो वो मुल्क तरक्की याफ्ता क्या हो, अगेन तरक्की ज़्यादा है, जो ऑपोजिट वट एवर इट इज, अगेन डिक्लाइन. सो when I was started looking at long time ago at the mental health ordinance or mental health law or the lunacy act, I will cover some of these things here. I was surprised the way it was written, and same confusion as all of you are having. So I started thinking how this can be simplified, how to understand the basic theme.
So the first and foremost thing that comes to your mind should be that the law and the mental health law talks about human rights. And in human rights, it's more rights of the patients than anybody else. So whosoever is suffering from mental disorder, whatever the disorder it is, it's about their rights. It's about their, again, problem. It's about their advantages and disadvantages. So always remember that mental health ordinance, mental health law, mental health thing is always concerned with human rights or the patient's rights. Nothing there for anybody else but the patients. When you are thinking about the patient, so if I am a patient and I start thinking about my rights as a mental patient, what are the possibilities? Whole of the law describes that. My rights related to my illness and related to society and cultural aspects of that situation. So remember that mental health law is the basis of human rights, is the basis of mental health patients' rights, which are considered to be definitely there. So all those illnesses initially were again grouped together 1930s में जब psychiatry इतनी develop नहीं हुई थी, so there were a less number of disorders and they were collectively called mental disorders, and there was some description related to it. With the evolution, most of the countries of the world started thinking why these people suffer, what should be done about it, and we moved from one mental asylums to community care just because of the rights, human rights thing. और ये किस्सा मुबशर साहब अक्सर अपनी प्रेजेंटेशन में करते हैं कि जब वो छोटे से थे तो वो हैदराबाद गए और वो गुद्दू बंदर का पागल खाना उन्होंने देखा, और वहां पे उन्होंने देखा कि लोग टिकट दे के इंसानों को अंदर देख रहे हैं जो कि अगेन जेल खाना जात की तरह बार्स के बिहाइंड बैठे हुए हैं और लोग उनको खाना फेंक रहे हैं और वो उठा के खा रहे हैं. सो उस वक्त जो ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट था और अब जो ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से अगेन मेंटल हेल्थ लॉ भी इवॉल्व करता है. जब कोई क्राइसिस सिचुएशन ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड और मेंटल हेल्थ पेशेंट राइट्स से रिलेटेड आती है तो नए लॉ उसके अंदर एड अप होते हैं. सो मोस्ट ऑफ द टाइम over the period of last 1 century, these laws have been described, balanced, and clarified. So all of you should understand that whatever the law is, it is to protect the right of the mentally ill patients. It's not for doctors, it's not for psychiatrists, it's not for public, it's for the rights, human rights of the patient who is suffering from that illness. So they should not be fearful, they should have protection, they should not be stigmatized, they should not be cornered, they should not be, again, given unfair system and justice. Every law is about the protection and protection of the people in it. So first and basic thing. When this is again slides taken from somewhere else, but I will try to explain it to you. Back in 1800s, when they, like, I will tell you the history of mental hospital Lahore. Lahore ka jo pagal khana hai, I won't talk in English, I will talk in Urdu about the history because I don't want to convey this information to the general public. So Lahore ka jo pagal khana tha, jab wo, uski history ye hai कि back in early 1900s, they saw that there are few patients who were wandering in the city and they were mentally unstable. So उन्होंने उनको इकट्ठा किया और लाहौर के रेलवे स्टेशन के बाहर एक अस्तबल था जहां पे घोड़े बंधा करते थे. उस अस्तबल में उन लोगों को उन्होंने डाल दिया. उस अस्तबल में घोड़े की शेड्स और घोड़े और वो सारा कुछ वहां मौजूद, and they were kept there. And then later on, that space was short
सो लोग ज्यादा हो गए, जगह छोटी पड़ गई, तो उन्होंने वहां से उसको उठा के एक और जगह शिफ्ट कर दिया. वो भी अगेन इट वाज सेम काइंड ऑफ अ स्टेबल और सम काइंड ऑफ दिस सिचुएशन. Afterwards, the number kept on growing and it went up to 50s or 60s. So then they thought that they should have a place where all of these people should be shifted. And they were again mental hospital Lahore, where they were kept. Afterwards, obviously, it evolved, it modified, it improved. Psychiatrists were again assigned there. They tried their best to whatever the services they could provide to these patients. Now, across the globe, people from the asylums have been shifted to the community. And the reason was, again, the human rights. In asylums, there were big wards where there were about 30, 40 patients, and they were locked. They were not allowed to go anywhere outside. They were guarded. They were, again, given treatments which unfortunately sometimes are not acceptable. So they saw that in most of the asylums, then things are pretty bad and it's the human rights violation. So they shifted from asylum to community treatment. And when the community treatment initiated back in Pakistan, unfortunately, community means periphery, but it's not actually like that. Community means that patients should be treated at their homes, at the places where they reside. They should be given as equal opportunities as any one of us should have. So एक घर, एक security, इलाज और उसके सारे मुहरकात. Now, unfortunately, again, how much it is practiced, we all know about it. But this is the theme of the community-based treatment of mentally ill, that the patients from asylums are shifted to the teaching institution so that they can be treated at their home, at their places where they belong, and they should get the best, proper, appropriate treatment which is desired for them. This is another theme for the people who are suffering from mental disorders. United Nations Principles for the Protection of Persons with Mental Illness and for the Improvement of Mental Health Care, 1991. Now, this is way back now, what, 40 years. It is not acceptable to have lower standards for mental health care in terms of either standards or resources than in the rest of the healthcare system. So, अगर सर्जरी वालों को 20 बेड इन पेशेंट के मिलें, तो अगेन साइकाइट्री वालों को भी 20 बेड पेशेंट्स के मिलने चाहिए. दैट इज इंपॉर्टेंट. अगर मेडिसिन वालों को 40 पेशेंट बेड्स मिल रहे हैं, तो साइकाइट्री को भी 40 बेड मिलने चाहिए. ये मगर मैं नहीं कह रहा, ये अगेन यूनाइटेड नेशंस कह रही है, विच इज अगेन द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन which takes care of everything else across the globe. खास तौर पे, okay, so Benazir cannot join. Okay, Benazir के लिए तो ये presentation रखी थी and she cannot join. Okay, so always remember that the healthcare system believes in equity and justice itself. और अगर healthcare system में ही equity और justice नहीं है, और अगर साइकाइट्रिक पेशेंट्स को, साइकाइट्रिक इन पेशेंट यूनिट्स को कम बेड्स एलोकेट होते हैं, कम बजट एलोकेट होता है, कम रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं, तो वी आर वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स एंड इट इज अगेंस्ट द लॉ. सो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल इलनेस इज नॉट परमिटेड. और इस चीज को लेकर मैं सारी जिंदगी लड़ता रहा, अपने सुपीरियर से, अपने सीनियर से, ब्यूरोक्रेसी से, पॉलिटिशियन से, वी हैव द सेम राइट. एंड आई एम श्योर मेरे सारे कोलीग्स उतना इक्वली दे फाइट फॉर इट एज वेल. द प्रिंसिपल्स रीअफर्म दैट इंडिविजुअल्स हु हैव अ मेंटल इलनेस और हु हैव एक्सपीरियंस्ड मेंटल इलनेस have the right to protection from 1. Exploitation, whether economic, sexual or other forms, and abuse, whether physical or in other forms of degrading treatment. So the concept of the least restrictive alternative in relation to the treatment
and require an individualized plan for the treatment. So हमें ये हक हासिल नहीं है कि हम किसी मेंटल पेशेंट को बांध दें, जकड़ दें, आइसोलेट कर दें, unless or until, again, we should have a law related to it, why, in what circumstances we can do that. So in extreme situation, किसी मरीज को, अब पाकिस्तान में अगेन अनफॉर्चुनेटली ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में हम किसी भी शख्स को कोई भी दवाई किसी भी तरह से खिला देते हैं. दिस इज अगेन वायलेशन ऑफ द राइट्स, ह्यूमन राइट्स. I cannot give a medication to a patient without his consent. So he should agree to take the medication. Only then the medication should be given. So previously, again, डेपो इंजेक्शन, खानदान वाले आए, एक मरीज की कहानी सुनाई, आपने उनको टीका लिख दिया, उन्होंने जाके डेपो पेशेंट को लगाया, उसको सुला दिया, उसको लिटा दिया, उसको बंद कर दिया. This is again human rights violation. And mental health law and mental health legislation, Mental Health Act, talks about these issues. So मरीज को कैसे ट्रीटमेंट देनी है, कहाँ ट्रीटमेंट देनी है, कितनी देर के लिए ट्रीटमेंट देनी है, कब दोबारा से रिव्यू करना है, कब दोबारा से उसको देखना है, किस वक्त उसको छुट्टी पे जा सकता है, किस वक्त उसको नौकरी से पे एक्सटेंडेड लीव दी जा सकती है. ये सारे इश्यूज रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट्स आर डिस्कस्ड इन मेंटल हेल्थ लॉ, मेंटल हेल्थ लेजिस्लेशन. और यही सवाल एग्जाम में आते हैं. सो एग्जाम में 3 तरह के सवाल आते हैं. एक क्लिनिकल सिचुएशन के, एक पेशेंट है, उसके माँ बाप आपके पास आए हैं, वो कह रहे हैं कि जी मरीज जो है वो नहीं आ सकता, और वो गुस्सा करता है, और वो लड़ता है, और वो मारता है, और वो पीटता है, और वो घर वालों की जिंदगी उसने अजाब बनाई है. तो उसके राइट्स क्या हो सकते हैं? अगेन, वी कैन नॉट प्रिस्क्राइब ड्रग्स टू अ पेशेंट, आइडियल सिचुएशन जहां पे रिसोर्सेज अवेलेबल हो. अगर इन पेशेंट साइकाइट्रिक यूनिट, टीचिंग हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूशंस में स्टेट ऑफ द आर्ट अवेलेबल होंगे तो हम इस तरह की अनएथिकल हरकतें भी नहीं करेंगे कि मरीज को छुप के दवाई दें, हम उसको टीके लगवा दें फैमिली के कहने पे. लेकिन जहां पे इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल नहीं होंगे, वार्ड्स अवेलेबल नहीं होंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज अवेलेबल नहीं होंगे, वहां पे अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी होंगी. एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट. Recovery model. The recovery-oriented approaches recognize the value of lived experience and bring it together with the expertise, knowledge, and skills of clinician. They challenge traditional notions of professional power and expertise by helping to break down conventional demarcations between consumers and the staff. Again, this is the most important key factor in mental health law. I'm sorry, मैं चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा, लेकिन let me check. Okay, screen not visible, Naila. Okay, Naila, I think you should rejoin because बाकी लोगों को नजर आ रही है और मेरी स्क्रीन शेयरिंग ऑन है. Okay, so 5 models for the recovery, from passive to active sense of self. So whenever I have to see a patient, I have to take a consent from the patient what should be done, right? Hopelessness to hope. If the patient feels ke, or relatives feels iska kuch nahi ho sakta, we have to find ways to adjust them and make sure that they are into recovery mode. From others control to self control. बजाय इसके कि फैमिली कंट्रोल करे, डॉक्टर कंट्रोल करे, अदालत कंट्रोल करे, again magistrate control करे, the control should be in the hands of the patient. So he should be listened and he should be discussed, and we should talk to them and justify and rectify the problems associated with it and give them the best possible care. This is the theme of the mental health law. Alienation to discovery. If new treatments comes in, if there is discrepancy in the treatment models from the patients to the psychiatrist, it should be balanced. And disconnectedness to connectedness means we should be able to make sure that whatever we are doing, it should be definitely, we should be answerable to somebody.
कि ये नहीं है कि हम कुछ भी कर दें, कोई पूछताछ नहीं. This is what unfortunately happens in Pakistan. So there are people who are becoming psychiatrists or they portray themselves to be a psychiatrist. अभी रिसेंटली भी एक वाकया हुआ कि एक टीवी पे इंटरव्यू एक साहब का चला जिसमें उन्होंने कहा कि वो साइकाइट्रिस्ट, बट ही वाज नॉट अ साइकाइट्रिस्ट. He was prescribing medications. Lots of people in Pakistan prescribe psychotropics, especially the psychologists and other people. Where it is legally allowed, they should do that. Where there is no legal obligation, again they should restrict themselves, because we have to think about patients' rights. So uniqueness of individual and having opportunities for choices and loving a meaningful, satisfying and purposeful life and being valued. So the theme is our patient should be valued. So when I came to this country, things are very different from Pakistan, of course. So my patient was again abusing me verbally, of course, not physically, abusing me in the clinic, and he was using all F words. And I was listening to him very calmly, patiently. I listened to him. I tried to rationalize, justify, calm him down. And all the staff members in the office were on the guards, and they were standing outside the doors कि पता नहीं क्या मुसीबत पड़ गई है, और डॉक्टर को अगर जरूरत पड़े तो फौरन से पहले इसको हम पुलिस को बुला लें और पकड़वा दें मरीज को. So police can take the person to the inpatient psychiatric unit for assessment and intervention. But my patients are people who need, again, help. They are deserving people. So if a patient says F word to me, I'll be happy to accept it. I don't mind it. I'm not bothered. But if a relative or somebody else uses that, of course, then I can take them to the task. So I can call the police and I can make them understand that they have done something wrong. That's the difference. That should be, all of you should also feel the same. हमारे लिए सबसे जरूरी हमारे मरीज की सेफ्टी है, उसकी इंडिपेंडेंस है, उसकी ट्रीटमेंट है, और यही मेंटल हेल्थ लॉ की थीम है. So working in partnership with person and carers to provide support, share information, communicate effectively, and intervene systematically is the theme of a mental health ordinance. Role of mental health legislation. क्यों चाहिए? To enunciate policy approach of the state, to set the tone and aspirations for the provision of care and treatment to patients, involuntary and voluntary, inpatient and outpatient. So voluntary admission कैसे होगा, involuntary admission कैसे होगा, inpatient में क्या treatment strategies होगी, outpatient में क्या होंगी. In everything, again, the patient is the key. To identify rights and obligations for patients and others affected. For example, carers, family members, police, treaters, psychiatrists, psychologists, whosoever is involved, everything is there. To provide guidance to clinicians, oversighting bodies such as mental health authorities and courts. To provide definitional conceptual clarity and to prescribe certain forms of conduct. That is important as well. So a little bit break after so much of a, again, forcible talk. किसी ख्वाब से फरोजा किसी याद में सिमट कर, किसी हुस्न से दरख्शां किसी नाम से लिपट कर, वो जो मंजिलें वफा की मेरे रास्तों में आईं, वो जो लज्जतें तलब की मेरे शौक ने उठाईं, इन्हें अब मैं जमा करके कभी ध्यान में जो लाऊं, तो हुजूम में रंग व बू में कोई रास्ता ना पाऊं. कहीं खुशबुओं की झिलमिल, कहीं ख्वाहिशों के रेले, कहीं तितलियों के झुमघट, कहीं जुगनुओं के मेले. पर ये दिल फरेब मंजर कहीं ठहरता नहीं है, कोई अक्स भी मुसलसल सरे आईना नहीं है. So when we talk about, again, this slide is adapted from Australian concepts, but still the basic theme stays the same. We need mental health law, mental health legislation, and reforms in it because of legislative purposes, definitions, involuntariness criteria, treatment planning, mental health tribunal, electroconvulsive therapy, psychosurgery, advances directive, seclusion and restraints, and forensic issues.
एक शख्स ने किसी को मार दिया तो उसके बाद उसकी क्या इंतहा होगी, वो सारी डिमार्केशन उसकी मेंटल हेल्थ असेसमेंट उससे रिलेटेड नामुस रसालत के cases that I have mentioned earlier as well is a very unfortunately sore point in Pakistan. And when I was in Pakistan and we were doing the mental health board of certification in the Punjab Institute of Mental Health, the board of certification, most of the time, 60% of the people were presented who were having psychiatric morbidity, and unfortunately, they were again accused of blasphemy. And we had to assess them and tell them that this person is not of a sane mind so that he can get the benefit out of it. Now, there are catches there as well. If you declare them mentally unfit, there are catches. If you don't declare them mentally unfit, there are problems associated with that too. So, this means that in our law system, still there are flaws that needs to be rectified, that needs to be corrected, because we are still not at the place where we believe that patient rights, human rights of the mentally ill people are still optimal. अभी भी हमारे जुडिशरी सिस्टम में बहुत सारे मरीज जो अगेन डिक्लेयर्ड हैं कि ये मरीज हैं, उनको सजाएं भी होती हैं, पनिशमेंट्स भी होती हैं, डेथ सेंटेंसेस भी होते हैं, और आए दिन कोई ना कोई एक नया केस मुख्तलिफ मीडिया पे मुख्तलिफ जगहों पे आपको नजर आएगा इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट देम. So this is important. Now, assessment of involuntary case, a person who is insane or psychotic or lack of insight, we cannot rationalize again. उसको हम कन्विंस करके इलाज नहीं कर सकते. So उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, उसको कैसे अस्पताल में इलाज के लिए बुलाया जाए, उसको ट्रीटमेंट दी जाए जो उसके लिए बेनिफिशियल हो, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो और आउटकम लॉन्ग टर्म अच्छा हो. This is what is mental health ordinance. Mental illness definition, and again there are various definitions. I don't want to go into the detail, but the whole purpose is to protect the patient and protect the society and to facilitate into a very nice state-of-the-art treatment. Again, when I'm sorry, I always refer back because I want to make sure that you people understand this. So when I was in Pakistan and I was heading a department, so I tried. Maybe I was not successful. Somewhat I was successful as well. But of course, I tried to make sure that people are again admitted, again assessed, given treatment, and then discharged in appropriate period of time, which is ethically, morally, legally safe for them, safe for us, and safe for the society. And this is what is the theme. So protective of community safety and facilitative of community confidence, including external oversight. कोई भी देखे तो वो ये ना कहे कि जी गड़बड़ हो गई. Now this was the background which I wanted you to understand. Let's talk a little bit about the mental health law in Pakistan. History. When I was doing my FCPS back in 90s, we were using Lunacy Act 1912. अब ये lunacy का लफ्ज वहीं से आया है, चांद से, ठीक है, लूनर सिस्टम से, कि वो कहते हैं जब चांद बड़ा होता है और पूरा होता है तो उसमें ऐसी कशिश शकल होती है कि वो लोगों को दीवाना कर देती है. सो ये वहीं से लफ्ज लुनेसी एक्ट निकला और गोरे ने उसको लुनेसी एक्ट 1912 का नाम दिया बिकॉज एट दैट टाइम इट वाज द ब्रिटिश रूल देयर. इमेजिन दैट देन इंडो-पाक सबकॉन्टिनेंट 1912 में was Lunacy Act 1912, and it was there till 90s, till the time I started my practice. And the Lunacy Act 1912 remained again the only thing which was there. Now the treatment strategies back in 1912 were so different. There were no psychotropics, antidepressants, SSRIs, state-of-the-art treatment strategies. At that time, the only treatment probably as far as
I can recall was ECT or some kind of other treatment modalities, but not as such psychotropic medication. And we were still using that law till 90s for more than almost 60, 70 years. And it was referred to persons with mental illness as lunatics or idiots of unsound mind. ये idiot जो है लफ्ज, ये भी एक लीगल टर्मिनोलॉजी थी उस जमाने में. Imbecile, idiots or lunatics. These were the words which were used for people who were suffering from mental disorders in Pakistan. Main emphasis was on removing persons from mental illness away from mainstream society and keeping them under custodial care or asylums to protection the society from person with mental illness. सारी दुनिया को बचा लो, इसको बंद कर दो. जो मैंने आपको शुरू में मिसाल दी कि जब घोड़ा के अस्तबल, घोड़ों के अस्तबल में इन मरीजों को बंद कर दिया गया कि सोसाइटी को बचाने के लिए इनको कॉर्नर कर दें और फिर उसके बाद उसको देखें कि उसका क्या हो सकता है. 2001, the first again breakthrough in Pakistan, Mental Health Ordinance 2001, that was made, and Lunacy Act repealed and replaced by Mental Health Ordinance 2001, MHO 2001, drew heavily on Indian mental health 1987. ये पाकिस्तानी मेंटल हेल्थ लॉ की बात कर रहा हूं कि वो 1987 का जो इंडियन मेंटल हेल्थ था उसको वहां से अडॉप्ट करके बना दिया गया. ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन एटलीस्ट देयर वाज अ ब्रेक थ्रू कि कुछ चीजें चेंज हुई, कुछ चीजें इंप्रूव हुई. ओके, ऐड मी अगेन वन. हु kicked out who? Okay. Sorry. So even then it was not a bad deal. At least something started after 70 years of Lunacy Act 1912. Used more humane and relatively updated terminologies like mental illnesses, psychiatric facilities, care in community. These terms were added into that. It was not, again, a bad deal. Addressed human and civil rights of persons with mental illness. So उसमें informed consent की जिक्र किया गया. Right and privileges of confidentiality की बात की गई. Right to protection of property and assets की बात की गई कि अगर ये पागल दीवाना मेंटली इल हो गया है तो इसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं किया जा सकता, इसके पैसे को जब्त नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके लिए भी उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड किए गए. And punitive measures against the treatment strategies like इसको जेल में बंद कर दो, इसको असाइलम में बंद कर दो, उस पर भी बात की गई कि ऐसा नहीं होगा. So it was a good thing. In 2001, Federal Mental Health Authority was first formed. Unfortunately, from 2001 till the time I left Pakistan, Federal Mental Health Authority probably changed number of times. I never heard that they have done anything significant. अभी मैं पाकिस्तान से आने तक की बात करूं, उसके बाद कुछ उसमें चेंजेस आई, कुछ इंप्रूवमेंट्स भी आई, which is a good way to go forward. But I don't know कि वो कितनी इफेक्टिव है. फेडरल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी एग्जिस्ट करती थी, फिर चीजें चेंज हुई, लॉ चेंज हुआ और फेडरल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी भी चेंज हो गई. वो बताता हूँ कि क्यों. सो फॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मेक द ऑर्डिनेंस एनफोर्सेबल. उसको लागू भी करना है, कानून तो बना दिया, लागू कौन करेगा, उस पर भी बात हुई. एडवाइस गवर्नमेंट रिगार्डिंग मैटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रिवेंशन एंड प्रमोशन. ये फेडरल मेंटल हेल्थ जो अथॉरिटी थी उसके ये बायलॉज थे. Advise on setting up on mental health services, on improving existing mental health services, and prescribe code of practice for mental health providers, service providers. This was, who is not able to join? Benazir. Surprising. Okay. And then prescribe code of practice for mental health service providers. ये Federal Mental Health Authority की basic domain है. In 2001, Mental Health Ordinance introduced and Federal Mental Health Authority formed. In 2003,
member of Federal Mental Health Authority reported that they were working on creating forms and procedures in line with Mental Health Ordinance. No additional news of any meetings or activities about FMHA. कम से कम मुझे नहीं पता चला। मैं पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता, वहीं पे रहता और एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन से भी वाबस्ता था, पर मुझे नहीं पता चला कि कभी फेडरल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी ने कोई ऐसा सिग्निफिकेंट काम किया जिसके पे मैं कह सकता था कि ये उन्होंने किया। अनफॉर्चुनेटली टिल 2013 मुझे नहीं खबर मिली। 2001 onwards, PAMH, HRCP and other stakeholders were involved. So कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस बीच में शामिल हो गई, जिसमें प्रोफेसर हारून अहमद साहब हैं कराची के, उनकी ये PAMH है, वो इन्वॉल्व हुई, कुछ और सोसाइटीज वगैरह इन्वॉल्व। उन्होंने कहा जी कुछ करें, इस पे कुछ नहीं हो रहा। अवेयरनेस रेजिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस वाज क्रिएटेड, बहुत सारी डिबेट्स हुई, फंक्शंस हुए, सेमिनार्स हुए, गवर्नमेंट के साथ भी बातचीत हुई। सो देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन। Advocacy for implementation of mental health ordinance was done. ये मेरा ख्याल है ये कतील शफाई की गज़ल है। एक कतील शफाई साहब का मैं लतीफ़ा रिसेंटली पढ़ा था, जिसमें वो एक अगेन बांग्लादेश में रहने वालों को उर्दू सुना रहे थे, तो उस पर कोई जोक था। सम अदर टाइम इंशाल्लाह वो भी सुनाऊंगा। और उसमें ये कि मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा ना दे, मैं हूं दर्द इश्क से जा बलब मुझे जिंदगी की दुआ न दे, मेरे दावे दिल से दे है रोशनी इसी रोशनी से है जिंदगी, मुझे डर है मेरे चारागर ये चिराग तू ही बुझा न दे, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर तेरा क्या भरोसा है चारागर, ये तेरी नवाजिश मुख्तसर मेरा दर्द और बढ़ा न दे। सो जब हम अपने पेशेंट्स को देखते हैं और अपने पेशेंट्स की हेल्प नहीं कर पाते, हमारा पेशेंट शायद इसी किस्म की फरियाद लेके आता हो, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर तेरा क्या भरोसा है चारागर, ये तेरी नवाजिश मुख्तसर मेरा दर्द और बढ़ा ना दे। थोड़ी सी देर के लिए आप साथ चलें और छोड़ दें तो ज्यादा दुख होता है। Mental health law in Pakistan. In 2001, tenure of members of Federal Mental Health Authority ended, right? So things were compromised. In 2007, Board of Visitors formed as it was in Sindh only, BOV. PAMH contacted the Federal Ministry for numerous times to urge the Federal Mental Health Authority to convene and begin its task to reconstitute and activate the Federal Mental Health Authority, but nothing was done. In 2007, in Sindh, there was a petition filed by, again, Pakistan Association of Mental Health, led by Professor Haroon Ahmed. In 2008, October, Sindh High Court ordered a Federal Ministry of Health to reconstitute Federal Mental Health Authority. In 2009, Federal Mental Health Authority was reconstituted but did not meet. In 2010, PAMH initiated a signature drive petition and FMHA and Supreme Court to take steps to implement mental health ordinance. In 2010, Chief Justice took a note and probably the first meeting was held. Probably, I'm not sure. And then there was some amendment. अब ये सारा कुछ हो रहा है, साइकियाट्रिस्ट लड़ रहे हैं सरकार से, कोर्ट से, सबसे, आउटकम कुछ नहीं बन रहा अभी भी, अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद क्या हुआ कि सडनली 18th अमेंडमेंट आ गई एंड द पावर्स वर गिवन टू द प्रोविंशियल पीपल. So the Federal Mental Health Authority was dissolved and Provincial Mental Health Authority was supposed to be constituted. So province पे जब वो 18th अमेंडमेंट के बाद हर सूबे को अपना मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस या लॉ बनाना था. उसमें KPK का अपना होगा, बलूचिस्तान का अपना होगा, पंजाब का अपना होगा, सिंध का अपना होगा. अब जब वो प्रोविंशियल लेवल पे चीजें आ गई तो फेडरल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी तो डिसॉल्व हो गई और फिर प्रोविंशियल लेवल पे क्या हुआ, ये भी एक दुख भरी दास्तान है. पंजाब में
मुझे इसी तरह याद है कि आने से पहले 2000 प्रॉब्ली 12-13 की बात है कि जब इस पे शोर मचा के 18th अमेंडमेंट आ गई है और लॉ होना चाहिए, तो उन्होंने कट एंड पेस्ट करके वही मेंटल हेल्थ एक्ट जो 2001 का था उसको कट एंड पेस्ट करके सिर्फ नाम ऊपर से बदल के हर जगह फेडरल की जगह प्रोविंशियल कर दिया और हर जगह पाकिस्तान की जगह पंजाब कर दिया और सेम लॉ वो इंप्लीमेंट हो गया. दिस इज अनफॉर्चुनेट बट दिस इज ट्रू. दिस इज व्हाट हिस्ट्री कैन टेल यू. सिंध में क्योंकि हारून साहब एक्टिव थे उसको करने में, तो वहां पे कुछ चीजें चेंज हुई और बलूचिस्तान में भी कुछ कोशिश की गई और केपीके में भी कोशिश की गई. सो अब आप लोगों के लिए एज अ ट्रेनीज एक क्वेश्चन कि फेडरल मेंटल हेल्थ तो है नहीं और सीपीएसपी एक सेंट्रल बॉडी है, पूरे पाकिस्तान में इम्तिहान लेती है, तो इम्तिहान में वो सवाल फेडरल मेंटल हेल्थ एक्ट पे नहीं दे सकते, प्रोविंशियल मेंटल हेल्थ एक्ट पे वो देंगे नहीं क्योंकि हर प्रोविंस का सवाल फर्क हो जाएगा. सो वो हर प्रोविंस के हिसाब से मुख्तलिफ सवाल तो बना नहीं सकते. सो वो सवाल आपको बेनिफिट मिल गया कि अब आपके लिए आसानी हो गई कि वो सवालात आपसे नहीं पूछे जा सकते कि वो पंजाब मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस क्या कहता है या केपीके का मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस क्या कहता है या बलूचिस्तान का मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस आपके लिए क्या कहता है. Isn't it good that you people are now benefited? But unfortunately, is this the solution to the problem? No, it is not. Is this enough that we are doing? No, it is not enough. Is it what should be happening? No, it should not be happening like this. So you should be aware of the mental health law, legislation, and other details so that you can take care of your patients. And the patient should have the rights. But unfortunately, it's very compromised. Advantage, yes, to the candidates, yes. Now, way forward, we need for advocacy for the reinforcement of the mental health law at provincial level. We need to advocate for improving upon the clauses. हर साल नई चीजें होती हैं, नए मसले खड़े होते हैं, उसको क्लैरिफिकेशन चाहिए, जस्टिफिकेशन चाहिए, लीगल सिस्टम में उसको इनकॉर्पोरेटेड रहना चाहिए. अगेन डेवलपिंग कंट्रीज में और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में और डेवलप्ड कंट्रीज में अनफॉर्चुनेटली यही फर्क है. यहाँ चीज़ों को करने का तरीका फर्क है, पाकिस्तान में फर्क है. लेकिन ये बात याद रखिएगा, जिस मुल्क में अदल नहीं उस मुल्क की रियाया और उस मुल्क की आवाम और वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी तरक्की नहीं कर सकता. हमारे मजहबी तौर पे भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस हुकूकुल इबाद को दी गई है. अल्लाह के हुकूक नमाज, रोजा, हज, ज़कात अल्लाह माफ कर देगा क्योंकि वो मेरी शहरत से भी करीब है. लेकिन अगर मैंने किसी का हक मारा है तो वो अल्लाह माफ नहीं करेगा, वो वही शख्स माफ करेगा जिसने उसका हक मारा है. और हम अगर इसी थीम को देख लें तो शायद इस पे लड़ भी लें और चीज़ों को आगे चला भी दें. सॉरी, आई एम गेटिंग लिटिल बिट इमोशनल है, बट आखिर में चलते चलते फिर क्वेश्चंस पे जवाब देता हूं. मेरी वहशतों को बढ़ा दिया है जुदाइयों के अजाब ने, मेरे दिल पे हाथ रखो जरा, मेरी धड़कनों को करार दो. तुम्हें सुबह कैसे लगी कहो, मेरी ख्वाहिशों के दयार में, जो भली लगी तो यहीं रहो, इसे चाहतों में से निखार लो. वहां घर में कौन है मुंतजिर कि हो फिक्र देर सवेर की, बड़ी मुख्तसर सी ये रात है, इसी चांदनी में गुजार दो. कोई बात करनी है चांद से, किसी शाखसार की लोट में ओट में, मुझे रास्ते में यहीं कहीं किसी कुंजे गुल में उतार दो. This is unfortunate, but this is true. This is what is the real life situation. When you study psychiatry, when you passionately practice psychiatry, and when you try to understand psychiatry, and you are incapable of doing anything for psychiatry. हम
बेहतर से बेहतरी की तरफ जाने के बजाय जवाल से गहराइयों की तरफ और कुओं की तरफ जाते चले जा रहे हैं। वर्क फॉर इट, ऑल ऑफ यू शुड डू समथिंग अबाउट इट। आई ऑलवेज से दिस। सो एग्जाम में अब आपको एडवांटेज है कि आपको क्वेश्चन जब आएगा तो एक क्वेश्चन जनरल होगा, दूसरा क्वेश्चन आपका पेशेंट से रिलेटेड होगा, क्वेश्चन आपका ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड होगा, क्वेश्चन आपका फेवरेबल पार्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस क्या होने चाहिए उस पे होगा, क्वेश्चन आपका होगा कि हमें मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी है उस पे होगा। क्वेश्चन मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस की क्लॉज नंबर 13 ऑफ इनवॉलंटरी एडमिशन पे नहीं हो सकता क्योंकि वो प्रोविंशियल लेवल पे चली गई। हो भी सकता है एग्जामिनर अगर देना चाहे तो वो पंजाब मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आपको चारों सूबों के मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस को देखना पड़ेगा कंपैरिजन में। इसके बारे में मजीद अगली दफा बात करेंगे डिटेल से। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो क्वेश्चन? सब समझ आ रहा है? वालेकुम अस्सलाम जी। सर फरहाना है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप जो इट्स नॉट अ क्वेश्चन बट मैं एक जनरल कमेंट देना चाह रही थी। जब मैंने इम्तिहान दिया था तो उस टाइम पे हमारे जो थे सीनियर्स, उन्होंने कहा था कि जो 2001 का मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस है उसकी लिटरली रोट मेमोराइजेशन करनी है, एंड वी डिड दैट। और उसका फायदा भी था क्योंकि एग्जाम में मतलब लाइक वाइवा क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के कि अच्छा सुसाइड से रिलेटेड कौन सा मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस का कौन सा पार्ट है, एंड दे आस्क यू दैट, या इनवॉलंटरी एडमिशन से रिलेटेड, या इंटरनेशनल जो फॉरेन सिटीजन है उनसे रिलेटेड, या सेल्फ हार्म से रिलेटेड। तो वो चीज़ें पूछी जाती हैं और बहुत सारे एग्जामिनर होते हैं जो कि मार्क इस बात पे कर रहे होते हैं कि आपको एग्जैक्ट क्लॉज नंबर याद है या नहीं है। जैसे 27 किस चीज़ का है, वन ऑफ द एग्जामिनर्स आस्क्ड मी। तो आई फाउंड दैट अनफॉर्चुनेट एज वेल, क्योंकि ज़ाहिर है आप इतना रोट मेमोराइज कर भी नहीं सकते, एंड इट शुडंट बी आस्क्ड ऑफ यू के एग्जैक्ट क्लॉज नंबर बताएं। व्हाट्स द पॉइंट इन हैविंग अ क्लॉज जब वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा, या एग्जैक्ट उसका नंबर याद करने का भी हमें क्या फ़ायदा है। लेकिन ऐसा होता है, आई डोंट नो अब अभी होता है कि नहीं, लेकिन जब मैंने इम्तिहान दिया था तब तो ऐसा हुआ था। फरहान, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू, ऐसा ही होता था। मैं जब फोरेंसिक के सवाल बनाता था तो जैसे मैंने अभी प्रेजेंटेशन में बात की कि मेरे क्वेश्चन ज़्यादातर ये होते थे कि अगर सुसाइड रिस्क असेसमेंट है तो मेंटल हेल्थ लेजिस्लेशन में सुसाइड रिस्क असेसमेंट को कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है, कहाँ पे डाला गया है। क्लॉजेस नंबर्स जो हैं वो आइडियली स्पीकिंग नहीं पूछने चाहिए, और अब तो खैर वैसे भी नहीं पूछे जा सकते। यस, आई एग्री विद यू कि जब आपने इम्तिहान दिया होगा उससे फेडरल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी भी होगी और शायद वो भी हो, और अगर 18th अमेंडमेंट के बाद आपने इम्तिहान दिया था और आपसे ये सवाल पूछे गए थे तो यू कैन ऑलवेज चैलेंज द एग्जामिनर कि जी आप फेडरल मेंटल हेल्थ मुझसे। 2018 की बात है, तो इतना इतना पीछे की भी बात नहीं है। सो अगर आपसे एग्जामिनर ने क्लॉजेस पूछी तो आप एग्जामिनर को डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हैं कि जी फेडरल मेंटल हेल्थ लॉ मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मैं सिंध मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर सकती हूँ, उसकी क्लॉज बता सकती हूँ। हाँ, ये एक ट्रिकी सिचुएशन है कि आपको एक अपने प्रोविंस के लॉ के बारे में और उसकी क्लॉजेस के बारे में रोट लर्निंग चाहिए। वो फरहाना अनफॉर्चुनेटली उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको रोट लर्निंग चाहिए उसकी। मैं अगली दफा इंशाल्लाह उस पर आपको एक ब्रीफ आउटलाइन दे दूंगा कि अगर आपको बलोचिस्तान का या केपीके का या पंजाब का या सिंध का मेंटल हेल्थ लॉ इंडिविजुअली सारों को देखने की जरूरत नहीं, तो सम अप करके मैं आपको क्लॉजेस कुछ बता दूंगा। लेकिन यस, वो रटा मारना पड़ेगा, उसमें ऑप्शन नहीं है, वो रटा मारना पड़ेगा और उसको आपको याद करना पड़ेगा क्लॉजेस को। Sometimes examiners are finicky, so I agree with you that there are people who unfortunately create problems for you, but ऐसा होता नहीं है। Usually examiners are quite considerate, और जब उनको ये पता चल जाता है कि ये एग्जाम क्वेश्चन या ये जो भी सवाल पूछा गया है ये